And now taking you straight to ground zero in Ayodhya for this special broadcast, it's Nishant Chaturvedi on the ground right outside. Thank you, Shiv. Hello and welcome in this special edition show of India First from Ayodhya, the mythical birthplace of Lord Ram, as you can see just behind me. So as the Supreme Court stressed on out-of-court settlement for Muslims and Hindus, we are here to understand, are the people ready for it? Is it really possible? Is Ayodhya ready for out-of-court settlement? First, let's look at this report. The most divisive dispute raging on for years. A watershed moment in Hindu-Muslim polarization. The Ayodhya Ram Mandir Babri Masjid dispute. After years of being mired in disputes, negotiations and legal cases, the issue is all set for a final mediation by a Supreme Court judge. In a crucial development today, the Supreme Court suggested that all the parties involved in the Ayodhya land dispute must sit together and try to reach an amicable solution. But what is most important is, will all parties consent? Keeping in mind the huge trust deficit which has always been present between the litigating parties. Supreme Court, in its observation, made it clear that the issue was a sentimental and religious one, and it should be discussed between the two parties. The court asked petitioner Subramanian Swamy to consult all parties and inform about the decision on March 31st. Swamy will have to explore all possibilities of negotiation to reach a settlement. हम समझौता करने के लिए तैयार हैं। मस्जिद बने, मंदिर बने, उसके अलग अलग जगह हैं। एक के प्राणी प्रतिष्ठा के कारण राम जाम पैदा हुए, वही है, उसको बदल नहीं सकते। और मस्जिद तो कहीं भी बना सकते हैं, सड़क में भी नमाज पढ़ते हैं मुसलमान। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की अभी तक जो का इतिहास रहा है, उसमें वो क्या लाइन लेते हैं, इस पर निर्भर करेगा, क्योंकि इस मुद्दे को यदि नहीं संभाला गया तो 1992 की परिस्थितियां फिर बनेंगी। सुप्रीम कोर्ट खुद ये कह रहा है कि ये बड़ा हिसास मसला है, ये बड़ा इसमें नाजुक मसला है, तो भाई आप जब 3 तलाक का मसला हियर कर रहे हैं तो आप उसी के साथ ये मसले को भी हियर करिए। In the past, at least 9 attempts have been made to arrive at a negotiated settlement on the Ayodhya issue. All of them have failed to yield any result. And this time, it might turn out futile again, as parties seem to be failing to agree. हम तो मध्यस्थता के लिए कल ही तैयार हैं। मध्यस्थता तो हम हमेशा चाहते हैं। हमारी सरकार ये चाहती है कि पहले कोई भी डिस्प्यूट जो है, हम तो इसको मध्यस्थता को और भी एनकरेज कर रहे हैं, चाहे लिटिगेशन होने के बाद मीडिएशन हो। मीडिएशन को जो हमारी सरकार जो है हमेशा एनकरेज करती है। कोर्ट को हमें पहले तो ये बताना है कि प्राइवेट नेगोशिएशन पॉसिबल नहीं है। मुझे पूरा भरोसा है कि मुस्लिम भाई सामाजिक समरसता में एक उदाहरण पेश करें और करेंगे, क्योंकि कोर्ट ने भी उनसे यही उम्मीद की। My view, this can be solved by amicable negotiation or through court only. BJP will never let this issue die down. The issue, if handled properly, could have sealed friendly relations between the two communities, but it instead ended up widening the divide. The latest judicial intervention will hopefully bridge this gap between the two communities. Bureau Report, India Today. It's pretty ironical. None of the parties, none of the sides are ready to yield. Everybody is expecting the other side to somehow make a compromise. And with this situation, it seems the deadlock is going to end only in the court of law. I was there in Ayodhya. I am here in Ayodhya right now, and I traveled on the streets of Ayodhya. I spoke to a lot of people. Here's my exclusive ground report from Ayodhya. The city of about 6,000 temples. Jai Ram, echoing at the Bhajan Sandhya Sthal. The fate of the city and the dispute that plagues it may just come to an end. India Today
traveled to capture the mood on the streets of Ayodhya in the wake of the Supreme Court observation of an out-of-court settlement. And in the religious city, both communities welcomed the handshake suggestion with open arms. प्रदेश में भी सरकार है, अगर ये चाहें तो कानून बना करके समस्या का समाधान कर सकते हैं, और जहां कोर्ट की बात है तो स्पेशल बेंच बना करके और बहस करा करके फैसला करा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट अपना राम मंदिर के पक्ष में, राम जी के पक्ष में फैसला सुनावे, और या केंद्र सरकार संविधान बना करके राम मंदिर का निर्माण करावे। सुप्रीम कोर्ट ने अगर पहल की है, कहा है कि अगर आपस में बैठ के मसले हल हो जाएं तो सो फार गुड, इससे अच्छी कोई बात नहीं। Priests of different temples even stated their faith in the Modi government at the center and the Yogi government in the state. इस समय बहुत बड़े बुद्धि योगी जिनका नाम मोदी जी है, इस समय भारत की गद्दी पर बैठे हैं और मोदी और योगी सामने बनता है। बातचीत के साथ साथ हम न्यायालय का भी फैसला स्वीकारेंगे, क्योंकि हाई कोर्ट ने एक रोशनी डाली। 60 साल तक मुकदमे चले, और लेकिन 60 साल के बाद जब वो खुदाई हुई तो खुदाई में तो पुरातत्व ने साबित कर दिया कि वो राम जन्मभूमि है। यह बातचीत तो बहुत दिनों से चल रही है, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। और यहाँ जो कोर्ट ने किया है वो तो वादी प्रतिवादी जो दोनों पक्ष ही इस बैठ करके समझौता कर सकते हैं, और इन्हीं के समझौता से समझौता हो सकता है। बाकी जितने लोग इधर उधर के बोलते हैं वो सब बेकार है। On the streets of Ayodhya, the popular sentiment that echoed was one peace shall prosper, a solution must be found. अब मुझे एक बात बताइए, क्या आपको लगता नहीं है कि इसके बारे में पहले बैठ के बातचीत करनी चाहिए, समझना चाहिए, रादर देन कोर्ट में बार बार जाएं? नहीं, जस्टिस बसु ने कई बार प्रयास किया इसके लिए और आम सहमत भी बनाने का प्रयास किया, लेकिन उसके बाद भी कोई हल नहीं निकल पाया। इसीलिए कोर्ट में मैटर गया था। कोर्ट में मैटर जाने का मतलब है कि हम लोग आपस में मिलकर जब बात नहीं बैठ पा रही है, कोई समाधान नहीं मिल पा रहा है, इसीलिए कोर्ट में। The long-standing Ayodhya issue is one of its kind. It has long defined people's fate and has made history for all the wrong reasons. And as people of the city ask for peace, the onus now lies on the acting parties from both communities. The view is divided, the opinion is mixed. What people want to understand and what people are saying here is that at the end of the day, we have to solve it out. How do you do it? That's a big question, because from both the sides, they've taken a very strong viewpoint. With cameraman Madan, this is Nishant Chaturvedi for India Today from Ayodhya. So it's very important for us to understand what are the different viewpoints in this entire issue. To start off, Acharya Satyendra Das, who is the chief priest in Ram Janmabhoomi, and he said here's with us. मुझे आचार्य जी एक चीज बताइए, इस पूरे मामले में एक जिक्र होता है बातचीत का। जब बातचीत की बात आती है तो फिर आप लोगों का अपना स्टैंड है, जो मुस्लिम समुदाय है उनका अपना स्टैंड है। बात फिर कोर्ट में जाती है, घूम फिर के होता कुछ नहीं है। आपको लगता है कि यही चलता रहा तो समाधान नहीं निकलेगा? देखिए, कोई चीज असंभव नहीं है। यदि हम असंभव को संभव करना चाहें तो होता है, जी हमें कोई संशय नहीं है। लेकिन दोनों पक्षों को ये निश्चित करना पड़ेगा कि हम ये विचार बन जाए कि हाँ, अब बैठ करके समझौता करके इसका समाधान कर लेते हैं, तो असंभव नहीं है। देखिए, अगर मैं we have Mahant Ramdas from Nirmohi Akhada who are the ones who filed the petition. Even in 1885 they filed the petition. Sir, मुझे एक चीज बताइए, आप हर कोई अपनी अपनी बात पे अड़ा हुआ है, क्या ये संभव नहीं है कि थोड़ा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज सब करें? नहीं, कर सकते हैं। क्या कॉम्प्रोमाइज? कॉम्प्रोमाइज यही है कि जहाँ भगवान का जन्म हुआ है वो छोड़ें उस स्थान को। ये कॉम्प्रोमाइज है? बिल्कुल है, वहाँ से हट के बनावे। वहाँ वो तो राम जन्मभूमि है, जन्मभूमि तो नहीं। लेकिन आज मेरी हाजी महबूब जी से बात हुई, वो बोलते हैं ये कॉम्प्रोमाइज नहीं है, ये हमारे लिए संभव नहीं। मैं बताऊंगा ना, कॉम्प्रोमाइज इबादत कहीं भी हो सकती है, लेकिन पूजा मंदिर में भी होगी, गर्भगृह में होती है, इसलिए संभव है। और सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया, आज एक रोशनी पैदा कर दिया कि अब ये संभव है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट अपने आप कहा, इससे लगता है कि अब जो है फैसला जल्दी आएगा। आप ये कहना चाह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इशारा कर दिया है कि आप सुलझाएं वरना हम सुलझा लेंगे, तो ये सुप्रीम कोर्ट का इशारा उनकी तरफ है?
नहीं, सुप्रीम कोर्ट का इशारा साक्ष्य की तरफ है। जो साक्ष्य हैं, जो सबूत हैं। एक बात बताइए, साक्ष्य क्या कहते हैं? वी हैव मिस्टर संतोष दुबे हु इज एन अक्यूज्ड इन द एंटायर इशू। साक्ष्य क्या कहते हैं इस पूरे में? कहते हैं वो राम जन्मभूमि है, राम जी का मंदिर था अयोध्या में, और कुछ हो नहीं सकता है। बाबर तो आक्रांता था, विदेशी आक्रांता था, इस देश में आया, उसने हमारी धार्मिक धरोहरों को लूटा, तोड़ा। और उसने मुझे एक बात बताइए आप। देखिए, इस मामले में बहुत खून बह चुका है, बहुत जख्म हो चुके हैं, और कोई भी इससे खुश नहीं है। सबको खुश रखने के लिए, सबका साथ, सबका विकास के लिए क्या संभव? तो सुप्रीम कोर्ट को आदेश कर देना चाहिए, जहां रामलला विराजमान है वहां मंदिर बन जाए, क्योंकि बाबर की यहाँ जन्मभूमि तो थी नहीं, जन्मभूमि तो भगवान राम की है, इसलिए वहां राम मंदिर बनना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को आदेश कर देना चाहिए, हम सभी सम्मान करेंगे। So we have with us Swami Hardayal Shastri, who actually predicted that Narendra Modi is going to be the Prime Minister, Yogi Adityanath is going to be the Chief Minister, and BJP will have a UP government. आपका जो शास्त्र है वो क्या कहता है? ऐसा है कि यह शास्त्र जो है, एक कह रहा है ज्योतिष शास्त्र कि इस समय शनि जो है मंगल के क्षेत्र के धनु राशि में चला गया है, जो गुरु का है। और यह जो आपका शास्त्र कुछ ऐसा नहीं कहता है कि सब लोग मिल बैठ के कर लेंगे, सब कुछ समाधान आ जाएगा? बिल्कुल कर लेंगे, एकदम कर लेंगे। और ग्रह इतना ज्यादा हो जाएगा कि ना कोई खून खराबी, ना कानूनी अड़चन, किसी भी तरह के नहीं। और ये मंदिर शुरू होने जा रहा है, और इसमें मुसलमान भाई ही शिलान्यास। It's also important to know people who are from Ayodhya. आप लोग कहाँ से हैं? दमोह से हैं। दमोह से। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, इस मामले का समाधान आपको लगता नहीं है बैठ के करना चाहिए? बैठ के अगर समाधान हो सकता तो बेस्ट है, दोनों बन जाए मंदिर एंड मस्जिद। हाँ, सभी का संतुष्टि होना चाहिए, सभी लोगों की संतुष्टि होनी चाहिए। कानून बना के नीचे हो। No, that's something very interesting which I'm hearing from a lot of Mahants here, that they should have a law. The parliament should pass a law, and then somehow the temple should be constructed. एक चीज मुझे बताइए, आपका नाम क्या है? दीनबंधु दास। दीनबंधु दास जी, मुझे ये बताइए कि इस पूरे मामले में आशा की किरण क्या है आपके लिए? आशा की किरण तो ये है कि राम मंदिर बनेगा, वो बनना ही चाहिए, क्योंकि अभी जो वर्तमान गवर्नमेंट है, इन्होंने एक ही मुद्दा भी उठाया था, और लोगों ने जो हिंदुत्व के वोट इनको मिले हों वो राम मंदिर और गौरक्षा के कारण ही मिले हैं। No, it's pretty interesting what we are seeing here is, now the moment Supreme Court came out with this observation that they should try solving the entire issue out of court, there was a hope. There was a hope in the entire country. But what I see in Ayodhya is that they hope that Supreme Court is finally going to give them the solution and not the talks. So it's very imperative for us to know the brief entire history of the entire dispute which has happened. Let's look at it. A flashpoint loaded with a troubled history. A mosque built in 1528 on a site Hindus believe where God Ram was born is torn down in 1992 by supporters of the VHP, Shiv Sena and the BJP on the wave of an unprecedented Ram Temple movement. This episode was a culmination of a campaign led by senior leader L.K. Advani, who set out on a Rath Yatra from Somnath to Ayodhya in 1990 to galvanize sentiments. Just a year after, then Prime Minister Rajiv Gandhi allowed unlocking of the temple gates. Advani's Yatra ended in 1990 with his arrest in Bihar, but the movement carried on. December 6, 1992. A 450-year-old mosque is razed to the ground by Kar Sevaks. The quiet town of temples, sacred cows and ancient ashrams, Ayodhya sets Hindus and Muslims on a collision course, sparking nationwide rioting and the deadly serial bombings in Mumbai. Meantime, the Ayodhya dispute remains caught in court cases, and the Hindutva groups continue to pursue their quest for the temple. The movement catapults the BJP to national power in 1998. Fast forward to 2003,
the Allahabad High Court orders the Archaeological Survey of India to excavate the disputed site. In its report on August 22, 2003, the ASI reports it found relics of a 10th century temple beneath the demolished structure. The All India Muslim Personal Law Board vows to challenge the ASI's findings. 7 years later, on July 26, 2010, the High Court bench reserves its judgment, advises all parties instead in the case to resolve the issue amicably. But none was keen. On September 30th, the same year, the court orders a three-way division of the disputed site between the Sunni Waqf Board, the Nirmohi Akhada, and the Ram Lalla. The judgment sparks a string of pleas opposing the partition. Just last year, on February 26, the Supreme Court allowed BJP leader Subramanian Swamy's petition for a disposal of pending challenges over the Allahabad verdict. On March 21, 2017, the top court recommends negotiated settlement of the pestering dispute. For the first time, a Chief Justice of India offered to mediate in person. Other two judges from the bench were also available to step in, the CJI said. For the first time, we have the possibility for a Supreme Court judge moderated negotiated settlement on this issue. So far, it has always been bilateral. At least 9 attempts have been made in the past to resolve the explosive dispute through dialogue. None succeeded. For now, the Supreme Court has asked petitioner Swamy to consult the parties and get back by month end. The jury is still out whether the latest effort for an out-of-court settlement will bear fruit or not. This is Harmeet Shah Singh with India Today Bureau. And now we move on to another big story from UP, which is UP Chief Minister's scheduled trip to the national capital, but an unscheduled farewell speech that made headlines today. On day 3 of his stint as the Uttar Pradesh Chief Minister, Yogi Adityanath headed to Delhi for a slew of important meetings in the power corridors of the capital. After a quick stopover at the Parliament, Yogi kick-started his capital sojourn with a meeting with Finance Minister. Shortly after, Yogi met the Prime Minister, the first meeting since Yogi Adityanath's swearing in on Sunday. Then, Yogi met the Home Minister, followed by a short visit to the Rashtrapati Bhavan. At 2:45, Yogi met the man widely seen as being behind his elevation to the Uttar Pradesh top job. Yogi rounded off the day with a meeting with BJP's tallest leader, L.K. Advani, now a member of the Margdarshak Mandal. But what was the reason behind the multiple meetings? Yogi Adityanath held marathon meetings with top ministers and BJP leaders. Speculation is rife that discussions were about ministerial berth allocations in the UP cabinet. Sources told India Today that this delay in portfolio allocation is largely because the centre is likely to take a call when it comes to allotting portfolios. After a day of marathon meetings in the capital, will the suspense over Yogi's cabinet end, and who will get the coveted home portfolio? With Shalini Lobo in Delhi, Bureau Report, India Today. Well, from Ayodhya, I can say only one thing, that there can be Ram Raj only if the birthplace of Ram, which is Ayodhya, spreads the message of peace, harmony and love in the entire country. We are signing out from this show, but don't miss Rajdeep Sardesai at 9 p.m. There's going to be a face-off between Subramaniam Swamy and Owaisi at 9 p.m.